disappointed or personally broken after a match in, like, I don't know. Like everyone's been broken after today's match. So yeah. Anyways, hello everyone, and this is not how we would have liked to meet you guys today, and this is very disappointing. Like there are no words to express the disappointment that everyone is facing today. So yeah, क्या ही बताए अभी. आप ही बोलो कुछ तौसीफ. अभी तक मैं मतलब आई एम जस्ट इमेजिनिंग सिनारियोज अभी तक कि क्या हो सकता था क्या नहीं, कैसे, लाइक हाउ एवरीथिंग प्रैक्टिकली वेंट अगेंस्ट अस. But we are responsible for whatever हाँ, happened. हम लोग हैं वो. आई डोंट डिनाई दैट, एंड लाइक ऑस्ट्रेलिया इज आल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर टेकिंग अवे दोस की मोमेंट्स. ये चैंपियन मेंटालिटी वही दिखाता है ना. Yeah, we have बट one comment already. As expected, they can't handle pressure. Another choke. This was not a choke per se. This was नो more of नो. a you were. So I won't call it a choke. It's like you are the better team. You did हाँ. not choke against a better team. You were the better team here. But you lost. Of course, there are reasons. But yeah, definitely not a choke. But yeah, मतलब हम एक तो 172 के बदले हाँ हम हाँ, लेट्स वही से वही 150 पे रेस्ट्रिक्ट कर उसी के लिए हम लाइव कर रहे हैं. विल बी वही. हाँ, डाइसेक्टिंग ईच एंड एवरी पार्ट ऑफ टुडेज मैच. तो चोक तो ये किसी भी एंगल से नहीं था. आई थिंक जब जेमी का विकेट भी गिरा था, ऑस्ट्रेलिया, लाइक दैट विकेट केम फ्रॉम नोवेयर उनके लिए भी. सो उन लोग को हम लोग सिचुएशंस या मोमेंट्स एंड दे रहे थे एंजॉय करने के लिए. we have made Australia invincible. Australia is definitely not invincible today. नॉट The Indian इनविंसिबल. team was way better on paper if you ignore the fielding. If you consider bowling and batting apart, एंड में थोड़ा सा हो गया. बट जो मतलब जो बैटिंग इंडिया के पास है, ऑस्ट्रेलिया इज नॉट इवन क्लोज. They have good batters, they have his all rounders and all of them, but the kind of quality, in spite of all three top order batters getting out so early, तो भी हम लोग इतना मतलब we could have chased 180. We could have chased वही 180 today. मतलब आज आज इन द बैटिंग एवरीथिंग क्लिक्ड, एंड स्टिल थिंग्स दैट डिडंट क्लिक वेयर things which did click in the beginning of the tournament, specifically Richa Ghosh. Yeah. So I have a very strong point on that. That Richa took 17 balls to score 14 runs, and Yeah. that hurt us a lot. That was the biggest pain point in the middle overs when we lost Jemima's wicket. We still had the game. Harman was in good flow. Richa being the best batter of India in this tournament, she should have taken those singles. She should have taken those ones, not twos. Of course, I'm not saying you don't push for twos, बट शी बीच में दो दो तीन ओवर का पट्टा आया था वेर वी स्कोर ओनली 3 और 4 रन्स एक ओवर में. और जब भी हाँ. आप इतना स्कोर करके जब आस्किंग रेट आपका 8 के पास है, तो देन प्रेशर तो हरमन पे आएगा ही. तो देर इज लाइक दैट वाज वन ऑफ द बिगेस्ट पॉइंट्स. मैं तो वही बता रहा था. एंड प्रीतिश विल बी जॉइनिंग अस इन सम टाइम. एंड प्रीतिश को तो मैंने वही बोला था. प्रीतिश वाज इंप्रेस्ड विद द बैटिंग. एवरीवन वाज इन द टूर्नामेंट स्टार्ट. बट दिस हैज बीन प्रीटी डिसअपॉइंटिंग टुडे कि थोड़ा मैच्योरिटी दिखाना बहुत इंपॉर्टेंट था आज के मैच में. आई थिंक मतलब एक चीज बहुत ही इंपॉर्टेंट है एड्रेस करने को यहाँ पे कि टिल हरमन वाज देयर, ऋचा घोष का वो डॉट बॉल्स मैटर नहीं कर रहा था, क्योंकि हरमन वाज नॉकिंग इट अराउंड, लाइक एक बीच में एक चार या शी वाज डूइंग दैट. बट देन वंस हरमन गॉट डिसमिस्ड, पूरा रिफ्लेक्ट हुआ कि हाउ वाज दैट अफेक्टिंग द होल इनिंग्स ऋचा Yeah, घोष but का. even before Harman got dismissed, I was saying the same point again and हाँ again हाँ, कि अगर वो मैं आप अग्री यहाँ करता पे हूँ, बट हरमन ऐसे फॉर्म में था ना आज, शी वाज इनविंसिबल. शी वाज. yeah. शी So कुड हैव टेकन अवे एनी मैच. Shubham is saying you should also mention. So we'll be mentioning each and every player who played today. एवरीथिंग विल So you need मेंशन to you need एवरीथिंग. to wait for a long time. हम इतना जल्दी 5 मिनट में बात करके नहीं जाने वाले. दिल Today's टूटा match है, like सबका टूटा है. हाँ, so सबका दिल टूटा है. Everyone has been disappointed today. तो हर एक चीज पे बात करेंगे हम लोग. आप बस जुड़े रहिएगा. We'll take your comments. We'll talk about each and everything. We have Pritish joining us. Hello Pritish. How are you?
Okay, Pritish has again gone. Looks like he has Explains, to. explains, explains. Pritish is still in grief. Yes. Karthik is saying Harman's wicket is not just a bad stick in ground, it's issue of fitness. Shubhan Subhajit अरे is आज saying वो सुबह को अगर people हॉस्पिटल जाके आई है तो क्या मतलब लोग. and nee, forget hospital. That was so. Anytime batters take such runs casually only. I'll be हाँ. very honest. और उसमें अगर बैट अटक गया तो हो जाता है मतलब. एंड It, हरमन अंडरस्टूड दैट, थर्ड अंपायर के जाने से पहले ही शी अंडरस्टूड दैट, yeah, yeah, दैट yeah. इज No, द ये even ना. या इवन आई सॉ दैट कि मतलब हाँ हाँ अगर हाँ. आप अरे वो बैट अटक गया बिकॉज यूजुअली व्हेन दीस काइंड ऑफ रन्स आर टेकन इन अ क्रिकेट मैच रनर्स बिकम वेरी कॉम्प्लेसेंट व्हेन यू आर रनिंग बिटवीन द विकेट ना दे बोले ठीक है पहुंच जाएंगे हम बट इट वाज वेरी अनफॉर्चुनेट कि वो अटक गया बैट एंड देन हीली ऑफ कोर्स दे आर ऑस्ट्रेलियंस मैन ऑस्ट्रेलियंस कभी एग्जैक्टली ऐसे हीली का. नहीं सी ऑस्ट्रेलियंस पूरा शिटाउजरी करेंगे वो लोग ऐसा नहीं करेंगे अरे इसका बैट अटक गया इसको मैं आउट नहीं करेगी करके इफ देयर वाज नहीं नहीं. एन इंडियन वुड हैव थॉट एन इंडियन वुड हैव हम्म. थॉट कि चलो मैं नहीं देखे एक बार धोनी ने वो कोई कोई तो इंग्लिश प्लेयर को वापस बुलाया था आई एम फॉरगेटिंग द इयान बेल था शायद इयान बेल को. हाँ इयान बेल को तो ऐसा ऑस्ट्रेलियन के पास से एक्सपेक्ट मत करो दे आर द वर्स्ट व्हेन इट कम्स टू सच थिंग्स सो एंड दे टुक देयर अपॉर्चुनिटीज एट द एंड ऑफ द डे नो वन इज गोइंग टू रिमेंबर दिस 20 इयर्स डाउन द लाइन हाँ 20 हाँ. साल बाद तो सिर्फ स्टैट्स दिखेगा कि ऑस्ट्रेलिया ने इंडिया को वापस हरा दिया सेमीफाइनल में सो ऑफ कोर्स वी आज ही कैन नॉट लोग एक्सपेक्ट मतलब जो नहीं देखे या अगेन आई सी अ फ्यू कमेंट्स की हरमन हैज गिवन हर विकेट टू कैजुअली एंड ऑल. अगर लाइक इफ समवन हैज वॉच्ड द मैच टुडे, I'll say they're lucky to see the Indian team get into the minds of the Australian team itna कि they were practically controlling until Harman got out or Richa got out, I'll say कि पूरा hopes चला गया था, but till then it was us who was like dominating the match by a huge match. जो predictions दिखाए जो भी, I don't care, ठीक है, but we were in their minds and we dominated the game. So yeah, this is kind of hurting, but I think, यार मतलब I think very few teams can and say they have a stronger batting lineup than and Australia. I was looking at our Instagram page and people commenting Harman was not serious while batting today. I mean, like, how can you even comment that person has scored a half century in spite of being injured? And आप ऐसे comment कर रहे हो कि she was very casual today. Man, she notched up a half century, almost India won there. You don't have the right to say anything. हो जाता है, that's fine. And we need to Harman's form is one thing that we like addressed in the video too, our video. Her the only thing that needed to be addressed from her end was like at what position is she coming to bat in, right? और वो आज एकदम पूरा sorted था अपने mind से कि आज I have to take the game deep, but I have to score at a healthy strike rate, which she did. No, so मैं starting से वो mention कर रहा था. I'm just using references because we were talking when the match was going on. But for the audience, the thing that I was mentioning since the start, what was कि इंडिया का चेस बहुत परफेक्ट चल रहा था. Even बहुत बहुत. even if we lost, हाँ, वो बास बॉल बोलते हैं मेंस क्रिकेट में. I will call it खास बॉल. काफी खास वे में वो लोग चेस कर रहे थे. But in spite of losing wickets, we kept the asking rate around 8.2, which is incredible considering we started off with 8.65. And then in that middle 12 of over, overs में I think we were 108 or something. yeah. तो तभी एकदम बढ़िया चल रहा था. फिर मैंने प्रीतिश को गाली देना शुरू की डीएम में कि प्रीतिश रीचा क्या कर रही है, रीचा क्या कर रही है. Because that is where everything went wrong with all those dot balls. No, see ऊपर ऊपर से अभी ये कोई तो चैट में पूछ रहा है कि what about the wide. See wide तो एक नहीं होने वाला था उससे. Forget about the कुछ wide. नहीं. See, the thing is, in such games, wide and all, you don't depend on such variables. कुछ मतलब नहीं है. Nothing अरे such variable. खुद के एबिलिटीज पे, खुद के अच्छे शॉट्स पे यू कांट डिपेंड. यू सॉ व्हाट पेरी डिड, दैट इज नॉट डन यार. वो क्या फील्डिंग So है यार, at the इलीगल end, है वो. Tausif, at the end, that two runs stopped by Elise Perry and that catch dropped by Shefali Verma, which went for a यस. four, were the difference between India रेणुका ठाकुर से losing. दो फुल टॉस लास्ट ओवर में. So दीज again, आर द डिफाइनिंग फैक्टर्स. so each and everything becomes a defining factor here.
because see, India gave a misfielding masterclass today. Okay, so let's start Yes. from the match. Okay, so we'll take comments and all, but we need to start from the beginning, from where the match Yeah. started off. So Australia came. Healy, we did not let Healy to break hell today. हमने उसको 100 पे 100 स्ट्राइक रेट पे रखा. ऑस्ट्रेलिया को एक डिसेंट पावर प्ले वगैरह दे दिया. और मतलब फिर लैनिंग को 200 आईक्यू वाला लगा के वी आर नॉट रनिंग, लाइक वी आर मेकिंग श्योर दैट डज नॉट गेट आउट. बट देन उसने भी मारना चालू कर दिया. तो लेट्स टेक अ लुक एट द फर्स्ट 10 ओवर्स प्लेड बाय ऑस्ट्रेलिया. प्रीतिश, तौसिफ प्लीज. First 10 over, it was a brilliant performance by India. 10 overs, 69 runs, and those 69 runs, if you ideally look at it, you have to take in account those misfills, and those were close to 10 runs in that. So let's say even if we counted overall 70, Australia was going at less than 7 runs per over, which is a very, very good thing to do when you have Elisa Healy, Beth Mooney, and Meg Lanning at the crease. But usme bhi, if you look at that also, that India was doing well. That there was, I think, one bad over in by a spinner in between. Rest India was doing very fine. Shikha Pandey was economical. Dipti bowled those 3 overs. She was very good. And even Radha came with wickets, and Sneh Rana was bowling well. Everything was going fine till then. But again, I had a feeling that those fielding mishaps are gonna hurt us, which eventually happened later on. So there were in first over Shefali misfielded one. Jemima was electric. Let's Elect. appreciate. Yeah, yeah. let's Man let's of the appreciate. match. Man of the Man match. of the Nothing else. Even if we lost, Jemima is man of the match. Let's Not just the fielding. then let's like she was electric. Ball one, she was into that कि आज Australia को हराना है. But how the whole team fielded was Very I was bad. like Very bad. it's just so despite of see that's where that's the difference between a good team and a great team. That those 10 overs when you have built up, you have stopped Australia. After that, you are slipping it so badly in the final 10 overs that you are giving away 103 runs. Yeah, 103 runs. Hmm. So नहीं मतलब सी पहले 10 ओवर में द बेस्ट थिंग दैट हैपेंड इन द फर्स्ट 10 ओवर्स वाज वी स्टार्टेड ऑफ विथ रेणुका ठाकुर. यूजुअली हम क्या करते हैं, हम रेणुका ठाकुर को 1-3-5 3 ओवर दे देते हैं. 3 ओवर्स आर डन एंड आई विश टुडे वो हो जाता है कि लास्ट ओवर नहीं बचती थी. बट सो फर्स्ट 3 ओवर्स वी गिव टू रेणुका. Today we gave 1 over to Renuka and we immediately brought Dipti. And that I feel was a brilliant move by India to make sure कि दीप्ति ने 3 ओवर करवा लिए and at the end also Dipti bowled incredibly well. So in terms of planning how your bowlers will bowl and the bowling strategy, 10 on 10 marks. We did everything we could do in terms of bowling strategy. पर वहां पे फिर मिसफील्डिंग का ही मतलब सबसे बड़ा रहा कि लैनिंग को मिल गया वो चांस, मुनी और लैनिंग को. I mean, if you बॉलर्स give को कोई सपोर्ट नहीं मिला. इन सिंपल टर्म्स बॉलर्स Hmm. को कोई सपोर्ट नहीं मिला फर्स्ट 10 ओवर्स में. इट वाज लुकिंग कि ठीक है, द बॉलर्स आर डूइंग देयर जॉब, बट वन थिंग that no one realized is कि these are players like Mooney and Lanning. If you drop their chances, maybe they are not scoring at that strike rate now, but if they play for a while, they'll take off at one point, and that happened. I mean, for me, the worst part was, that intent on field, that like that running. If you look at the how they ran after the ball, which is going towards a boundary, or you saw how Elise Perry was running. She's playing since 2008. She's the grand old women of T20 cricket. Okay, you look at her diving, you look at her saving those crucial runs, and then you look at Indian youngsters, less than 25 years, all of them, and they're running as if I don't know what they're running after. So And where is this coming from? Where is the so fitness? this is coming from, see, इंडिया में जमीमा वही कर रही थी. एक दो जमीमा से छूट गई क्योंकि उनकी हाइट कम है, तो थोड़ा एक रीच का प्रॉब्लम हो जाता है. बट आई टेल यू, सो जेमिमा एक डुअल एथलीट है, इलाइस पेरी एक डुअल एथलीट है. पेरी ने तो फीफा वर्ल्ड कप खेला है ऑस्ट्रेलिया की तरफ से. जेमिमा अंडर 19 महाराष्ट्र हॉकी टीम थी. आज भी मैं वापस बोलता हूँ, आई हैव सीन जेमिमा ड्रिबलिंग द बॉल टुडे. इवन इफ शी प्लेज सेंटर फॉरवर्ड इन हॉकी, वो इंडिया टीम रिप्रेजेंट कर सकती है. दैट इज हर क्वालिटी इन हॉकी एज वेल. एंड वहां से सारा एथलेटिज्म आता है. And really, sorry to say, but Indian team is not good in fielding, barring 2 or 3 players. Very true. Very true. Like we need to, and this has not been a problem since the past 4 years. This has been a problem
I was reading up on women's cricket history and this has been a problem of India since the past 2-3 decades. तो ऐसा नहीं कि अभी अभी हो रहा है, ये 20 साल से 30 साल से यही चीज चलते आ रही है. एंड इट वाज क्लियर कि आज हम लोग अगर इनको 10-15 रन रोक देते तो वी कुड हैव सेल्ड टुवर्ड्स अ चेज. और हमने तो पहले 3 विकेट भी गवा दिए थे. Mazak, mazak, man. एग्जैक्टली. That was just giving a. I mean, see, we not glorifying this. कुछ नहीं कह रहा हूं मैं. I'm not even saying that this is something we should be talking about in a positive note. But even when you look back at the chase, this was a close game. India was in the match. India was in the match till that 17th over. India was in that game till till probably last 2 overs before India imploded. So a close game tha. It's not that we can't do it, but when will we do it is the biggest question which keeps coming. यस तौसिफ. व्हेन विल वी डू इट यार, मतलब लोग पूछ तो रहे हैं कि व्हेन विल वी डू इट, बट ऐसे तो कभी नहीं जीतेंगे. आई थिंक वी नीड अ, ऑनेस्टली मैं बता रहा हूँ, वी नीड अ मेंटल कोच, वी नीड अ हेड कोच उससे पहले, मेंटल कोच से पहले. ठीक We है. need a fielding coach, we need a वी head नीड अ coach, we फील्डिंग. need a mental conditioning coach, and we need a strength and conditioning coach. यस. हमने यस. so again drawing parallels like how Naman just did, Indian women's hockey team at Tokyo Olympics. Okay, that team, crossed every limit they had, and the one reason behind that was they outran their opponents. And उसके पीछे क्या reason था? Strength and conditioning coach Wayne Lombard. Wayne Lombard अभी कहाँ है? He's with Delhi Capitals helping them with it. Strength and conditioning is probably one of the most important thing right now. Indian hockey team, men's hockey team lost because of that, because of lack of a strength and conditioning coach and a mental coach. And again, same issues here in the women's cricket team also. No head coach, no mental conditioning coach, and no fielding coach, neither like anything about strength and conditioning or anything. So yeah, I think a lot of people are commenting lack of fitness. It is true. नहीं, Lack of लैक ऑफ फिटनेस है. और प्रिटी लैक ऑफ एविडेंट. फिटनेस एक दिन में नहीं आएगा. मतलब इट्स नॉट लाइक 2 महीने पहले वर्ल्ड कप के एक कोच अपॉइंट कर दिया एंड ये नहीं होता. इट्स अ साइकिल. देयर इज अ रीजन व्हाई इट हैपेंस आफ्टर 2 इयर्स. द T20 वर्ल्ड कप होता है 4 साल, तो वो प्रिपरेशन एक टाइम चाहिए, लाइक कंडीशनिंग चाहिए. And like often to change these kind of eras that many of you are saying ki England and Australia are the defining teams in women's cricket. In order to change that, that was also the case with men's cricket before 2000. Okay, so in order to change that, there needs to be a revolution, which is only brought by, I'll say, primarily fielding in these major tournaments. एंड सी वी हैव एवरीथिंग. तो आप सब अब कोच की बात कर रहे हो, बैटिंग कोच चाहिए, सब सब लाओगे आप. चलो, आपने बैटिंग कोच लाया, आपने ये फलाना कोच लाया, आपने डिमका कोच लाया, आप जीत रहे हो. यू डोंट नीड दिस पीपल. इन स्पाइट ऑफ नॉट हैविंग दिस पीपल, यू हैव सच अ क्वालिटी टीम. और ये नियर मिस हम कब तक करेंगे? टिल व्हेन विल वी लूज टू ऑस्ट्रेलिया लाइक दिस? एंड दिस इज नॉट द फर्स्ट टाइम. चलो, कोई पहली बार देख रहे हो, बोल देंगे चलो इतनी अच्छी टीम से अपन ऐसा हार ले. ऐसा नहीं है. हर एक मैच में वी आर लूजिंग लाइक दिस. रिमेंबर दैट वन नो बॉल, देन दैट वाज सुपर ओवर वी वन, द रीसेंट सीरीज वी ऑलमोस्ट डिफीटेड देम इन 3 मैचेस. तो ऐसा नहीं है कि हमारे पास क्वालिटी नहीं है. वी हैव एंटायर टीम हैज अ वेरी गुड क्रिकेटिंग क्वालिटी. बट इफ दीज इश्यूज आर नॉट एड्रेस्ड एंड इफ वी डोंट स्टार्ट विनिंग, देन देयर इज लाइक नो एंड टू दिस. बिकॉज दिस इज नॉट द फर्स्ट टाइम इंडिया हैज लॉस्ट अ सेमीफाइनल. लोग बोलते हैं कि वुमेन्स क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया इंग्लैंड का खेल है. ऐसा नहीं है. ऑस्ट्रेलिया है, इंग्लैंड है, साउथ अफ्रीका, न्यूजीलैंड, इंडिया, इवन वेस्ट इंडीज वर द चैंपियंस इन 2016. सो इट हैज बिकम एज बिग एज मेंस क्रिकेट, टू बी वेरी ऑनेस्ट. ऐसा ही बात नहीं है कि आप एक या दो टीम अच्छा कर रही है, सभी लोग अच्छा कर रहे हैं. तो लाइक दीज इश्यूज नीड टू बी एड्रेस्ड. एंड टुडे आवर प्लान वाज वेरी गुड. अपार्ट फ्रॉम द मिसफील्डिंग, आवर प्लान वाज वेरी गुड. एंड आवर प्लान वाज लाइक, मैं तो बोलूंगा ये जो चेंजेस थे, और आज पूरा एकदम स्टार्ट ऑफ द डे से जो जो शुरू हुआ अबाउट लाइक players getting replaced and all, Sneh Rana coming into the mix all of a sudden, ठीक है, and performing like that, like what a brilliant first over, just 5 runs from it, but then again like 14 runs in a, I think, last over. तो यही सब छोटे छोटे चीज मैटर करता है ना, एंड यू नीड टू एड्रेस दीज कंडीशंस. अभी हम लोग एज फैंस, if we get toxic and we say things like, why don't we criticize our players, why do the ex cricketers not criticize the players? अरे criticize करने से वो चीज नहीं होगा. You just need to mentor them properly. It's as simple as that.
That's true. That's true. So तौसीफ भाई थोड़ा भावनाओं में बह गए वहाँ पे, आई एम which is सॉरी। very understandable. सभी लोग To be very honest, this is a point of time when you have to be indifferent with results because I have learned that hard way. So it's better to be indifferent with results because yesterday we were discussing stuff when we were doing the preview. So the our preview we had mentioned something that who will go? Will Rajeshwari Gaikwad be dropped? She was dropped. शी वाज She was dropped this time, and we were expecting. But yeah, Pooja Vastrakkar thing was very unfortunate to start with, and it never felt like I mean, the morning when the news started coming, my first thing was how is it gonna impact this Indian team's mentality right now? Because we are already lacking on that mental part, and now your captain is had fever. One of your all-rounders, Radha Yadav, had fever. Your one of your all-rounders is your premier all-rounder is out. So how's that gonna shape the morale of the team? Kind of which reflected a bit on fielding, but yeah, still I mean there is one thing, and that is that Jemima Rodriguez needs to stay. No more dropping her from the team. You no, don't. forget dropping Jemima मैं Rodriguez. हाँ वही मैं बोलने जा रहा हूँ, नहीं नहीं नमन जो नहीं, बोलने जा रहा है। जमीमा रोड्रिगेज को आप चांदी सोने की थाली में खाना खिलाओ। नहीं अरे मतलब कैप्टन why did we even drop? Why did we even drop Jemima previously? That was a very absolute bullshit decision. Okay, मतलब वो तो डिसीजन क्यों लिया गया था मेरे को मालूम नहीं है, but this player who is 22 and this is her third World Cup, ऐसे हम बात कर रहे थे पहले, शी इज ऑलरेडी वेरी Hmm. एक्सपीरियंस एंड वो एक्सपीरियंस दिख रहा था। ठीक है, द शॉट शी गॉट आउट वाज अनफॉर्चुनेट ऑन नॉर्मल डे, कि आप वो मार देते हो दैट शॉट, शी वुड हैव कन्वर्टेड डेफिनेटली, No, but no, बट no, द but that's her, Naman. That's her go-to shot. So I don't have any complaint. It's like saying हाँ, ki why Rohit Sharma played a pull. She scores runs on those shots, so that is fine. Yeah. एंड जमाइमा वाज हिटिंग द ऑफसेट ब्रिलियंटली, मतलब ऐसा, मतलब वो मैं तो मीम बना के बैठा था कि हम डाल देंगे जीतेगा, तो आई वेस्टेड 3 मीम्स टुडे, आई कुड नॉट पोस्ट 3 मीम्स ऑन आवर ट्विटर, द ओनली रीजन बीइंग इंडिया लॉस्ट, कि भैया एक्स्ट्रा मक्खन मार के दो, कवर ड्राइव देना करके, that was how she was playing, the ball was coming on the bat, even Harmanpreet, she was striking the ball effortlessly, everything was working in India's batting department, but the small mistakes that we did hurt us very badly, the आई small थिंक small जेमाइमा mistakes. का बैटिंग से भी आई विल से द वे शी लीडेड द स्क्वाड इन द फील्डिंग, like she was the only one who was like pumping up the team in terms of like intensity दिखाओ, और मतलब we need to field well especially in the boundary. So, and somehow you see when these players who stand apart from the rest of the team when it comes to fielding, the ball travels to them rather than they. तो वो एक बहुत अच्छा moment था कि like in between the over only she fielded one and then she said मैं boundary पे जा रहा हूँ. She called Shefali I think from the boundary and then she changed that. So yeah. Okay, I think let's go now in terms of the this thing. Let's first talk about this thing. This is a very important thing for me, and that is I think the Shefali Verma conundrum right now. Let's we do have we do have very good youngsters waiting on the wings. Kiran Navgire is there, brilliant domestic player. Okay, yet Yeah. to come like I think no, I think she made her debut. No, You have Shabani. Kiran Navgire played last year. Yeah, Kiran Yeah. Navgire has made her debut. Yeah. Huh. So Shabani Meghna is there. You have Yastika Wada. There are these players. Shefali Verma, right now, it looks like to me is that she has been performing bad with bat. Okay, let's keep that aside for a side because she's a very kind of player who will change the game once she gets going. Let's keep that aside. But her fielding, you can't be like that. You can't be that casual in the field. You can't be that. How do I put it? Just like playing like a school Yeah. हाँ cricketer. You हाँ. can't play like that. To play at this highest level, like look at the commitment from Elise Perry, and she is almost double your age. हाँ Even नो, not double, she. एलिस पेरी ने वर्ल्ड कप भी जीत लिया है, वो मल्टीपल टाइम्स ओडीआई वर्ल्ड कप जीत लिया है, T20 वर्ल्ड कप जीत लिया, एलिस पेरी ने सब कुछ कर दिया है, उन्होंने फुटबॉल भी खेल लिया है, कल मानो एलिस पेरी गोल्फ खेल के नेली कोर्डा को भी वर्ल्ड नंबर 2 कर दे, सी एलिस पेरी, बट व्हाट प्रीतिश मेंशन्ड राइटली, सो तौसीफ प्रीतिश वाज टॉकिंग अबाउट शेफाली वर्मा's fielding. I'll talk about not just her fielding but also her discipline issues as well. The way she Yes. reacted after catching the ball today, so you have dropped one catch,
वो कैच के वजह से आपको ऑलरेडी 22-30 रन का टीम को झटका लगा हुआ है, ठीक है. सो ऑलरेडी दैट हैज इम्पैक्टेड यू अ लॉट, and even then you are showing that kind of attitude after catching the ball, then that's not right. That's not going to work for you in the future. Especially as Priti said ki ये इंडियन टीम है, एंड वंस विमेन्स आईपीएल स्टार्ट, न्यू एंड न्यू टैलेंट्स विल कीप कमिंग, एंड यू कैनॉट से आपने 15 और 16 के एज में अच्छा खेला है, सिक्सेस मारा है, दैट्स नॉट हाउ इंडियन क्रिकेट टीम वर्क्स. बी इट मेन, बी इट विमेन, वी हैव सीन द बेस्ट ऑफ द बेस्ट प्लेयर्स going under pressure because they have not performed well. But So disciplinary. Naman, the point you are making, Shweta Sherawat has already batted her out in under 19 Women's World Cup. We saw that Exactly. how brilliant Shweta was. And the point being is that like someone like Richa Ghosh, let's say Richa Ghosh was very disappointing today. But if we talk about the whole tournament, she has been brilliant. She has shown that sign of constant improvement, right? Like she has shown that sign that she's improving every day. Her wicket keeping is still not par. She missed out that catch of Meg Lanning thrashed Renuka Singh in the last over. So yeah, but वो graph भी नहीं दिख रहा है शेफाली के उस केस में right now. Shefali is just stagnant at a point, and probably at a point where she was like 3 years back. So it's very weird at this point of moment because the team needs to take a call here, I guess. हाँ नहीं call देखो शेफाली I think like it may turn things for bad also, because now considering she is the captain of Delhi Capitals too, ठीक है, ये एक point है. So the mentality issue we are talking about and anything that we are saying, it is it can make things very good for her, or it might make things very bad for her realistically जब बात करने जा रहा हूँ. तो तौसीफ मैं यही बात कर रहा था. सो पीपल इन द चैट आर टॉकिंग अबाउट कि शेफाली का बैटिंग स्ट्राइक रेट इज ग्रेट. सो वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट शेफालीज बैटिंग हियर. शी इज अ ब्रिलियंट ओपनर. आई मीन सिंस शी केम, मतलब बहुत अच्छा खेली है वो, दैट नो डाउट अबाउट दैट. बट एज प्रीतिश मेंशन्ड, इलाइस पेरी, इन स्पाइट ऑफ her career being, her cricketing career being over 14 years, around she might be in the 15th year of her cricket, ये सब होने के बावजूद इलाइस पेरी इज एज कमिटेड टू फील्डिंग एज शी वाज देन. उतना ही डिसिप्लिन है. एक ओवर खराब डाला, शील्ड से ऐसा नहीं कि मेरे को और एक ओवर डालना है, मेरे को ये करना है, वो करना है. सो द डिसिप्लिन इज द मोस्ट इंटीग्रल पार्ट, एंड दैट्स व्हाट मेक्स अ गुड प्लेयर इनटू अ ग्रेट प्लेयर. So there is a very thin line between a great player and a good player, and these disciplinary issues create the difference. And again, the point of fielding and fitness बहुत crucial है, not just in fielding but the ones and twos. We saw Australians were taking twos very easily, effortlessly twos ले रहे थे वो लोग. नहीं, आज one thing I can't deny that हम लोग का running between the wickets आज काफी सही रहा है. But At least most of the time like far जेमिमा better खेली है ना. than, हाँ वही, हाँ. But वही like Harman and Jemima showed कि मतलब अगर रन चेज में जिंदा रहना है तो this is one way we have to do it through, and Richa Ghosh didn't learn from that. That is another bad thing. But she's young. These are things that like make you a better player, because the power hitting that Richa Ghosh has in her armor, that is natural. She has worked upon that. Now, as Pritish said, she has to improve her wicket keeping. She has to improve her running between the wickets when it comes to the death overs, because we saw this in the England match also, rotating the strike with Deepthi, right? So this is one thing which she needs to work upon. But again, Richa Ghosh is one type of character who accepts her fault, I'll say, at least on the field, ki this is one wrong that I did, and I have to now own up and take up the responsibility when the next moment comes. uh, that isn't the case with Shefali right now, because in field में अगर एक run out या एक misfield हुआ, and the captain shows you trust कि you're a young gun fielder, you're the captain of the under 19 team, just field at the boundary, and then you drop a sitter like that at the boundary, that is not done, that is not acceptable. And these things can't be just criticized. मैं वही बोलूंगा फिर से कि these things need to be addressed by the coach and upper management, नहीं तो I नहीं think समझेंगे. Tawsif, there are few questions which नहीं I really मैं want. वही मैं प्रीतिश मैं हाँ वही बोल रहा हाँ था. सो फर्स्ट ऑफ ऑल we have already cleared this. I am clearing it once again. People are talking about Harmanpreet being careless. Again, that was not careless. That is how you take a run. That is how
usually batters take a run when ball is at the boundary. वो आराम से रन कंप्लीट हो रहा था. That was unfortunate. Unfortunate is the only word I feel. That was definitely not careless. And saying that Harmanpreet was careless, तो she is the one who made this a chase. पहली बात Yes. तो Yeah, true. उनके वजह Yeah. से ये चेस बना है. वो नहीं होती तो ये चेस भी नहीं होता. एंड लाइक मैं नहीं बोल रहा कि वो और तेज भागना चाहिए. देयर इज नो नीड टू रन फास्ट देयर. वो बैट अटक गया. वो शी वुडंट सेकंड बी रन था. या सो दैट वाज प्योर अनफॉर्चुनेटली. एंड उनके वजह से चेस बना था. यू कैन नॉट कॉल हर कि उन्होंने खेला नहीं है बराबर. तो एनीवेज या प्रीतिश नेक्स्ट प्लीज. Yeah, so there are a few questions about why India loses always at the grand level in badminton. People are mentioning in badminton, cricket, hockey, everywhere. So I'll say the why it comes down to that mental part. I think there was a lot of, I think I want to address this right now. There was a lot of uproar on social media, and when Sania Mirza was appointed as the mentor of RCB, people came and Yes. started questioning that why is Sania Mirza here. So I'll tell you why I'm making this point, because Oldsman, the man who has won multiple Olympic gold medals, multiple World Cups with the Netherlands women's and men's team both, has coached India to a junior World Cup. He never played at the top level of hockey. Okay, there is Mike Horn, who was involved with Kolkata Knight Riders 2014 World Cup winning campaign. He was involved with Germany 2014 World Cup winning campaign, and he was involved with South African team when they become test number one. Mike Horn is a mountaineer. So the point being here is that mentality, the focus on the mental conditioning, the mentorship, it's lacking in Indian sports. Let's be very honest about it. You can talk about across sports, you can talk about across genders. It's not there. We have seen that our shooters imploding in 2020 Olympics. We have seen our hockey teams doing it multiple times. So that's the biggest factor why India is why good Indian players choke against low ranking player. That's the problem. It's the mentality, mental conditioning. A lot of players in India are young, playing at the top level, be it shooters, hockey mates there, cricket mates there. So you can't expect them to, just win everything because physical, technical, and mental, three aspects of any sport, and they are important. People, there are comments coming up ki mental aspect kya hota hai, and I never understand that, because it's so. Let's say right now having a someone like Sania Mirza in RCB camp means that the 9 girls who have never played international cricket in that team have someone to look up to. They have a person who's a serial champion, who has proven herself at the international level, won 6 Grand Slam, to look up to, and that can do wonders for anyone. So that's Yeah. my point. Why हाँ it तो never happened with other country? तो Yeah, I think, yeah, तो you. या सो वट एवर प्रीतिश मेंशनड इज ट्रू. क्या होता है कि इवन व्हेन यू प्ले अ गेम, तो मैं तो देखो भाई, मैं तो यहाँ पे कोई हम लोग इंटरनेशनल खेले नहीं है, और मैं जितना खेला हूँ मैं खेला हूँ स्टेट तक. एंड उधर भी इवन फॉरगेट स्टेट, इफ यू प्ले अ लोकल टूर्नामेंट, तुमको नर्वसनेस आता है. तुम कोई भी स्पोर्ट खेलने के पहले तुम्हारा हाथ कांपता है, ठीक है. एंड दैट इज टू, अगर इस लेवल पे होता है तो वी कैन नॉट इवन इमेजिन व्हाट हैपेंस एट द टॉप लेवल. बट अगेन देयर इज दैट ऑब्जेक्शन कि चलो इनका ये हो जाता है कि इनको आदत हो जाता है उस लेवल पे खेलने का, विच इज ऑल्सो ट्रू. बट वी आर अक्रॉस स्पोर्ट्स एंड इवन इन क्रिकेट देयर इज नो डिफरेंस इन क्वालिटी बिटवीन इंडिया एंड अदर कंट्रीज. एंड द थिंग इज वी नीड टू बी वेरी हार्ड मेंटली. देखो इंडिया में ऐसा है कि हम लोग ऐसे है ही नहीं कि आज वो एलिसा हिली ने जो किया वो नॉट अ सिंगल इंडियन विकेट कीपर वुड हैव डन दैट. So that the word is cunning. We are not cunning as Indians. We are not cunning. हम लोग थोड़ा इमोशनल है. We have to accept that Indians as we as Indians are emotional. But now at a time when mental conditioning has become one of the most important aspects of sport, we need to be hard on ourselves, and we need to be, we need to have a coach everywhere. जैसे हम बीच में कोलकाता थंडरबोल्ट्स के फिजियोथेरेपिस्ट से भी बात किया था विथी ने, तो वो इंटरव्यू देख रहा था कि आजकल ये सपोर्ट टीम ही बनाएगा एक एथलीट को, बिकॉज ईच एंड एवरी अदर कंट्री इज डूइंग दैट. तो अगर वो लोग कर रहे हैं तो यू नीड टू हैव समवन लाइक दिस इन योर टीम. एंड इट्स नॉट जस्ट अबाउट हैविंग अ प्लेयर एंड अ कोच राइट नाउ. इट्स अबाउट अ टीम ऑफ 5 to 6 पीपल हु विल एंश्योर दैट योर टीम डज वेल. तो ये पूरा एक ऑलराउंड एस्पेक्ट आता है. इंडियन वुमेन्स क्रिकेट टीम, कमिंग बैक टू द पॉइंट, नीड समवन लाइक दिस. दे नीड समवन, क्योंकि पीछे डगआउट देख के लग रहा था कि इनका पूरा हिला हुआ था आज. मतलब सब लोग ऐसा आधे रोने पे आ गए थे, एंड एवरीवन वाज नर्वस. सो वी नीड. I think prime example उसका like यास्तिका भाटिया, how she got out.
today. Indecision, run out error, these things. She's playing her, I think, first T20 World Cup, right? This is, and this kind of run out happens. And not to forget, she's making a comeback directly in the semi-final after just playing one in the group stage. So these are things that you cannot control, but you need to shape properly these youngsters when they play these big tournaments. तो वो ना एक एक दिन में नहीं बोलना चाहता, बट जब भी हम लोग देखे हैं, इट्स लाइक अ टीम विनिंग अ टूर्नामेंट, देयर इज, दे ऑलवेज मेंशन अ फैमिली और अ स्टाफ वर्किंग बिहाइंड द सीन्स. बिहाइंड द सीन्स हम लोग का कोई है नहीं. बिहाइंड द सीन्स हम लोग के 2 दिन पहले स्नेह राणा थी जो आज आके फील्ड पे खेल रहा था. ठीक है, इट्स वेरी सिंपल. So again, these things are like crucial to address. Vignesh also said one thing that like he's not criticizing the players, but at least question the strategy. I completely agree with that. I'm saying just ki when we are criticizing, and by criticizing I mean negative criticism, constructive criticism is always welcome. Okay. So when we are criticizing these players on in a negative way, it affects them more. Okay. Abhi, what we need to do is criticize the management that is not appointing the right coaches. क्योंकि ये एक cyclic process है ना. If you criticize the management the right way, then they appoint the coaches who criticize the players and shape them to be better players. So there has to be an approach in which the sport or the year develops. Like Priti said, this has not uh, this is not a one year situational case कि आज हम लोग ऐसा आ रहे हैं. There has been numerous times where, and this has yet again gone unaddressed. So like years after years this has gone addressed, and it takes us nowhere. Again, it's a heartbreak. And to think how we feel at this moment, to even think how the players feel sitting there on the pitch, giving in their all and just succumbing to the moment, I think. तो Yeah. वो और भी गंदा है, and it breaks them. Like it And breaks them. Players like and see, Harmanpreet and Jemima, who have played before, showed today ki how the experience before has helped them. That showed today, okay. But from the rest, it again showed कि कहीं तो वो कुछ तो एक lacking था. तो वही वही बात है कि सी इंडियन विमेन्स क्रिकेट हैज सीन अ लॉट ऑफ स्ट्रगल एंड ये मामूली स्ट्रगल नहीं है. उन्होंने लिटरली लास्ट 40 साल में अपने मेल काउंटर पार्ट्स को पैसा मिलते देखा है, मैचेस खेलते देखा है. मिथाली राज इन हर करियर ऑफ 24 years played around like 10 or 12 tests if I'm not wrong. हरमनप्रीत has played 3 or 4 tests. So इतना बड़ा ये है कंपैरिजन है. In spite of that, they made finals before, and as people say, it's a two-team sport. It's not a two-team sport. There are a lot of good teams in women's cricket, and इन्होंने बहुत struggle देखा. And finally, we are at a place where women's cricket, the future of women's cricket is looking incredibly well. तो यहाँ पे इंडिया को अच्छा करना इंपॉर्टेंट है, नॉट जस्ट फॉर द टीम, नॉट जस्ट फॉर द फैंस, बट फॉर द lakhs and crores of girls who are watching them on television, because they'll be inspired. One victory is all what we need. हमें एक विक्ट्री चाहिए कि बहुत पूरा जनरेशन इंस्पायर हो सकता है. एंड इफ सी छोटे बच्चों को इतना नहीं समझता कौन क्या बैटिंग कर रहा है, कौन क्या बॉलिंग कर रहा है. द ओनली थिंग दैट मैटर्स टू देम, आज ये अपने टीम को जिता के लेके गई, भारत का नाम रोशन किया, एंड देन दे विल बी इंस्पायर्ड टू पिक अप द बैट. And considering we are at a very crucial stage of women's cricket with the women's premier league starting next month, and things are going to get tougher for the team. तो अभी तक ये जो टीम में लोग खेल रहे थे, the players, they were picked at the age of 15, they were picked at the age of 17, और अभी तक ये लोग क्रिकेट खेल रहे थे, they did not have the pressure, वो प्रेशर जो I'll compare with the men's team जो वहां पे फेस होता है कि पीछे से there are 1100 people knocking on our doors. And now women's cricket team players will face that pressure कि हमने अगर 2 गेम खराब खेल लिए तो हमारे पीछे there are like for like replacements waiting for us. So there is that additional pressure which is going to be created after the women's premier league. तो ये आना I बाकी है. और think अभी आप हाँ बोलो बोलो प्रीति. I think नहीं यार फेयर पॉइंट नमन, मैं उसी पे आ रहा था कि WPL is gonna bring a shift for sure, but मेरा पॉइंट यहाँ पे आ जाता है फिर कि how is our team management looking to take that shift on the stride? Because let's be very honest, 2008 में IPL के बाद India has never won a T20 World Cup in men's cricket. ठीक है, that's another fact which exists. So my point here is कि
uh, what I want, like if you ask from a pure fans perspective, that what do you want in women's cricket is more and more cricket. The amount of cricket these girls play, the more times they tour, do India A tours, do under 19 tours, which is a culture in men's cricket already there, which helped India become a brilliant team in test cricket and men's test cricket. Because Indian A team would tour the foreign countries often. So the वही point is कि वो culture develop होना बहुत important, and I'm really hopeful women's IPL के बाद that will happen, because all these five franchisee coming, they are focusing on their scouting इस बार तो, although they didn't have much time, next time they'll have a time, they'll have a system, scouts are already there. I think RCB's head scout Vanita VR mentioned that the lack of data set at the domestic level पे इतना कम data available है players का कि बहुत मुश्किल हो गया था एक पॉइंट पे फिगर आउट करना कि आप इनमें से ये जो 400 नाम है उनमें से आप किनको चुनोगे, एंड विच इज अ फेयर पॉइंट. लेकिन विद WPL कमिंग, आई थिंक वो डेटा भी आएगा, और एक वो जो सिस्टम होता है ना स्काउटिंग का, वो भी डेवलप होगा. बिकॉज आईपीएल का एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट तो इंडियन क्रिकेट पे ये रहा कि यश धुल, अंडर 19 वर्ल्ड कप विनिंग कैप्टन फ्रॉम इंडिया, केम फ्रॉम अ आईपीएल टीम्स अकेडमी दैट वाज दिल्ली कैपिटल्स. तो ये चीज अभी वापस WPL में, एकेडमी कब स्टार्ट होगा आई डोंट नो, बट दिस कल्चर इज गोना बी देयर, जहां पे ये टीम्स डोमेस्टिक टूर्नामेंट्स पे फोकस करेंगी. हर जगह स्काउट्स होंगे, हर जगह कोचेस होंगे टू गाइड दीज यंगस्टर्स. True. And another thing is, when the Women's Cricket Association of India, so when BCCI took over, they completely did away with the under 16 and under 19 tournaments. तो तभी तभी 5-10 साल के लिए इंडिया का पूरा ग्रासरूट सिस्टम खोखला हो गया था. तो वी नीड टू स्टार्ट बिल्डिंग द ग्रासरूट सिस्टम. एज आई टोल्ड, नाउ टियर सिस्टम जाना पड़ेगा. बट मैं तो ये सभी फैक्ट भी इग्नोर कर रहा हूँ. चलो, आई एम थ्रोइंग एवरीथिंग अवे. आई एम जस्ट इतना ही बात कर रहा हूँ कि वी आर द बेस्ट टीम इन द वर्ल्ड करंटली. अगर फील्डिंग ठीक कर लेना, हमें कोई हरा नहीं सकता. फील्डिंग ठीक कर ले, थोड़ा मेंटल स्ट्रेंथनिंग कर ले, एंड आई थिंक तौसीफ विल आल्सो एग्री विद दिस कि आज जो परफॉर्मेंस देखा, ये मामूली टीम का परफॉर्मेंस नहीं था. नॉट अ गुड साउथ अफ्रीकन टीम, नॉट अ गुड न्यूजीलैंड टीम वुड हैव एबल टू डन दैट. एंड ऑन देयर डे इंग्लैंड से भी नहीं होता था ये. आई विल बी वेरी क्लियर इन दिस. नहीं, I'll just like add to that one more thing कि these are players who haven't been that successful in terms of results after 2020. ठीक है, I remember us posting a thread. They took the aggressive approach कि नहीं, we won't just like play for the results and all, जो कि in men's cricket we criticize often कि bilaterals and all that. ठीक है, the women's cricket approach was totally different. So we toured all the SENA countries. We took on the challenge like hell, and this is the exact match where it showed कि where playing in those countries, in those away conditions, has actually helped us. कि ऐसे मैचेस में, क्रंच सिचुएशंस में, और यू से इन अ नॉकआउट मैच, एकदम लाइक जस्ट गोइंग बिफोर गायकवाड को ड्रॉप करना, दीप्ति शर्मा को पावर प्ले में बोल कराना, दीज चेंजेस राइट अवे एट द लास्ट मोमेंट, डू दैट, डिलीवर ऑन पॉइंट, वो सब दोज रिफ्लेक्टेड एंड दे शोड द रिजल्ट्स. Apart from that one area, that is fielding. So Yeah. these changes also took 3 years to reflect, from 2020 to 2023. So fielding is one thing that like will take more time. So if we don't initiate it now, which I think has to be initiated, because with the women's Premier League coming, and someone also mentioned ki, yeah, the number of players and all in the teams, that the competition increases by far. ठीक है, and when, like, I don't want to say this, but then again, the emotional side of states and fans, when they get attached, economy gets attached to the sport, the management has to like start taking it seriously. So And when the auction happened, the money which came in instantly made Smriti Mandhana like equally paid as Sam Kerr of Chelsea. Yeah. So like that is the impact what money, especially in cricket, can make an impact. And as I think Vignesh has two questions, that why only 6 players, I'll come to that. Because the quality you need, because to, let's be very honest, India's quality is very limited when it comes to women's cricket. Apart from that pool of 30 players, you don't have that quality seeping at domestic level. So for an initial model, I think it's a brilliant thing to have 5 foreigners there.
I think, yeah, it's 5 foreigners, if I'm not Five wrong. plus If you one associate, I think. Four four plus usual plus four one associate. Yeah, yeah. associate. Okay. Uh-huh. So in that 4+1 also, I think only Delhi Capitals has done a good job to get Tara Norris for her associate tag. Rest none of the teams got. But anyway, having those those foreign players is gonna help the Indian players groom. They will learn from them. And the second question which Vignesh has, that is talent coming in Indian domestic cricket. Any idea? See, talent is there. We saw in under 19 World Cup. We have talent. It was on display there. Parshavi Chopra, Harlegala, Shabnam Sakil, Sonam Yadav, Shweta Sherawat. I can go on and take the names. And it is there. Players are doing well. But why they don't get what we have discussed before, that they don't get that match practice. अभी matches होंगे ही नहीं. There is just one tournament happening. One tournaments, two tournaments, a set of 20 matches. How do you keep that practice in those 20 matches? So that is the point. एंड आई ऑल्सो नहीं आई नहीं थिंक नहीं ये बहुत ही सही कहा कि दिस इज अ वेरी गुड इनिशियल मॉडल, क्योंकि अभी वी आर गोइंग विद 4+1, राइट? एंड दिस कैन चेंज लाइक इन द फ्यूचर व्हेन द लाइक टीम नंबर इंक्रीजेस ऑल्सो, तो दिस कैन चेंज एंड देन द नंबर ऑफ players can be consequently decreased. सो ऑल ऑफ दिस अगेन पॉइंट्स टू द वन फैक्ट जो हम स्टार्टिंग में बात कर रहे थे। और मेरे को ये और एक अच्छी बात याद आई कि प्रीतीश बोल रहा था कि स्ट्रेंथ एंड कंडीशनिंग कोच चाहिए। सो इफ वी स्टार्ट गिविंग मोर टूर्नामेंट्स टू मोर मैचेस एंड मोर टूर्नामेंट्स, दिस इज गोइंग बाउंड टू हैपन टू विमेंस क्रिकेट टीम। स्ट्रेंथ एंड कंडीशनिंग नहीं होगा तो फिर इंजरीज विल स्टार्ट हैपनिंग लेफ्ट एंड राइट। इंजरीज बहुत होने लगेंगे। तो स्ट्रेंथ एंड कंडीशनिंग इज द आर एंड द नीड ऑफ द आर एंड द बिगेस्ट थिंग आई फील इज, अगर आपको फिटनेस लाना है ना, यू कैनॉट डू इट बाय हुक, डू इट बाय क्रूक। इंट्रोड्यूस अ टेस्ट, अ फिटनेस टेस्ट, जो योयो टेस्ट जो होता है, क्रिएट अ वेरिएशन, क्रिएट एनी फिटनेस टेस्ट। मेरे को बहुत सारा फिटनेस टेस्ट होता है। टेक अ फिटनेस टेस्ट, कीप इट की इफ यू डोंट, तुम कितने भी, साउथ अफ्रीका ने क्या किया अभी, we know what Yeah. South Africa did. Who Then, was that? Dane Van Niekerk. then their captain, Dane, their existing yeah, captain, yeah. their So technique. South African captain Dane Van Niekerk couldn't pass the fitness test, and she was removed from the squad. So if you do something like this, players डरने लगेंगे, उनको समझ जाएगा कि ये हम नहीं करेंगे। वॉट एवर आर बैटिंग टैलेंट इज, वॉट एवर आर बॉलिंग ऑलराउंडर टैलेंट, आर फील्डिंग, फील्डिंग टैलेंट की बात ही नहीं, क्यों फील्डिंग इधर आएगा। तो आपका जो भी टैलेंट हो कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई मैटर नहीं करता। देयर वाज वन डे देयर वाज अप्रोर अबाउट डेन वैन नियरकर्क्स फिटनेस वाला, इट डाइड डाउन बिकॉज they are taking fitness seriously, and in the years to come South Africa will reap rewards. And if we don't start something like this, then we'll face the same problems continuously on and on. This was a problem with the men's cricket team back, जब वो फील्डिंग अच्छी नहीं करते थे, everything was revolutionized. And यहाँ पे करना ही पड़ेगा, or else we'll keep leaking runs like we are doing now by drop catches, not being good at the boundary, not collecting the ball well. So that is going to continue if we don't bring the fitness test. Shayandeep Nagai, what do you think WPL money has effect on mental condition of a player? वो तो like we can't anticipate that for now. I think the concern is real. It isn't something which is here because हाँ ऐसा होता है कि when players get a lot of attention and especially that economic like outpour suddenly, so it gets into the head sometimes. But I don't think that will happen because here the economic shift will be like overshadowed by the exposure that they'll get with the like quality of international players in their team. So yeah. Yeah, Pritish. So Tawsif was addressing a comment regarding the impact of money on the minds of players. Something. I think. See, that's always gonna be there. Virat Kohli had a very bad impact of money on his head. If you remember 2008, 9, 10, 11, Virat Kohli before getting into 2011 World Cup squad, Virat Kohli was going on a spiral. He has mentioned it multiple times, and you can check the stats. The stats tell you the story. But you have to, that's where things come, that वो जो culture create होगा ना, कि अभी क्या है कि the Indian men's cricket team has that culture where everybody is earning well in some aspect, and the young players, the one who gets lost in that money, they are lost. Nobody can bring them back. Nobody can take them back to here. That's where a lot of things comes on management also.
कि आप कैसे अपने यंगस्टर्स को हैंडल करते हो. हैंडलिंग ऑफ योर यंगस्टर्स इज गोना बी वेरी की फॉर यू. For example, like how Rahul Dravid handled that under 19 team for those 4 years, where he made a rule that no youngster can play for 2 World Cups. You have to play this number of A matches, you have to play. So we are reaping rewards of that culture, that उस टीम के प्लेयर्स यहाँ आके 200 रन रिकॉर्ड बना रहे हैं, उस टीम के प्लेयर्स ऑस्ट्रेलिया में जाके ऑस्ट्रेलिया को मार रहे हैं इन बॉर्डर गवास्कर ट्रॉफी. दैट वाज ऑल राहुल द्रविड्स अंडर 19 बैच. शुभमन गिल, ऋषभ पंत, वॉशिंगटन सुंदर, जिसने like the one who were behind that Gaba win. So that culture eventually, and what Naman also mentioned, that fitness culture. So ये जो अभी the professionalism जैसे आएगा ना, वो WPL will do, will bring वो फ्रेंचाइजी वाले सिस्टम में जहाँ पे हर फ्रेंचाइजी का अपना एक प्रोफेशनल सेटअप है. And all the best part is कि out of this 5 franchises, 3 of them are existing IPL franchisee. So they know how to run this team professionally. उनको पता है कि एक सेट ऑफ प्लेयर्स को कैसे हैंडल करना है. So when that professionalism comes, जब वो professionalism आएगा, I think पैसा is तो like, I mean, it's a big thing. Obviously, at 16-year-old getting a 10 lakh paycheck is a very big thing. But I think it totally depends on those teams. For example, I think who has, Shabnam Shakil has got 10 lakh paycheck. She is 15 years old. But she is working under Mithali Raj. So Abhi, you see, that thing is gonna be very important because these franchisees' role will be very crucial here. The mentors, the coaches, ये जितने वनीता, मिताली राज, Julan Goswami, Rachel is there, and the other, mentors who have played the game. So I think that's going to be very crucial. It's up to these, mentors and the teams, the team management, especially Indian team management. Yeah, so that's true. ये काफी सारी चीज मतलब बहुत फैक्टर होने वाला है WPL के वक्त. And again, selectors, while selecting women's cricket squads in India after a couple of years, they are going to face a conundrum, unlike now when we don't have much options. तो अभी options भी आएंगे नए नए. But again, I'm focusing on the greater good that if more options come, then players it will be a survival of the fittest starting now in women's cricket in India. It is going to be a simple case of survival of the fittest, and everyone will have to be fit if they want to keep their place in the team. So this is what's clearly going to happen. And yeah, people, Vaishnav is asking why Indian players particularly scared of Australia and almost. So we are not scared. We have a mental block of some kind that Australians are good. And as viewers also, when you see Australia playing, it's like, Yeah, अरे ये लोग हाँ बोलो तौसिफ. like they are better in वो एलिस पेरी का फील्डिंग या ये एलिस हीली का वो प्रेजेंस ऑफ माइंड रन आउट करने का, दे आर बेटर इन दोज सिचुएशंस. सो वी आर नॉट स्कैर्ड, बट वही जो आपने बोला कि इट इज अ मेंटल ब्लॉक. इट इज अ सिंपल मेंटल ब्लॉक कि ऑस्ट्रेलिया को हमने ही इनविंसिबल बनाया है. ऑस्ट्रेलिया इनविंसिबल है नहीं. Let's not Australia, confuse देखो, the two facts. Australia is never invincible. Every now and then, Australia has been beaten by teams. Again, I'll go back to hockey again because I saw Germany beating Australia. And that was like a poetry for me because as someone who has seen Australia, defeating teams like anything, Germany were nowhere in the game. Yes, I'll just Yeah, I continue. So think what he wanted to mention was कि Australia, so Germany made a comeback against Australia. So बात वही है कि we are the ones who have made Australia invincible, and उनको हम confidence दिलाते हैं ये बात बोल के. See, they are good, so no doubt. So sometimes teams are invincible. Australia is good, but again, it has been India only who has defeated them. We made a video why Australia fears India, and everyone saw a classic case of why Australia fears India in the past 3 hours. So there are problems, as we mentioned, that need to be addressed. Just आई summing थिंक it up, ये सबसे अच्छा एग्जाम्पल या पॉइंट तो था कि हाउ द ऑस्ट्रेलियन मीडिया अप्रोच्ड दिस सेमीफाइनल, कि डज ऑस्ट्रेलिया एक्चुअली फियर इंडिया. yes they do. If it was not, they would have like matlab they would have eaten up the Indian team alive before the match, but even they feared. So that's a statement right there. एग्जैक्टली कि इफ ऑस्ट्रेलिया, आपको मालूम ही है कि ऑस्ट्रेलिया मीडिया कितना शिटाउजरी करता है when you look at other sports and other stuff. So if Australian media is giving credits to this team that they are good and all, then the team is good and we need to start believing. And again, a good fan culture. So people blame the Indian team that the Indian team keeps on losing in pressure situations. This happens, that happens. But again, as fans, what are we doing? If India loses a match, everywhere people start exploding. It's not even been half an hour, 45 minutes since India's loss,
एंड सब जगह लोगों ने अपना कचरा, मुंह से कचरा निकालना, टाइप करके कचरा निकालना सब जगह शुरू कर दिया है, each and every. So if you want a team to win, then you don't deserve a winning team. The kind of fans there are in India, they don't deserve a winning team. क्योंकि आपका बिहेवियर देखो, आप हॉकी वर्ल्ड कप के टाइम इतना गंदा बिहेवियर, आज भी सब जगह, मतलब आई लिटरली से कि कचरा पेटी बना के रखा है. पीपल आर लिटरली वॉमिटिंग इन कमेंट सेक्शंस एवरीवेयर, not just on They our are. platform, they across platforms they are. So you do not deserve a winning team if you act like this, because see, this is sports, everyone is there to win. Sometimes you win, sometimes you lose. We will address, like we'll discuss on, हम बात करके कुछ होने नहीं वाला. हम so our social media manager Sayan is in the chat, is saying हर कचरे कमेंट पे रिप्लाई दे रहा हूँ. So this is the kind of dedication we need. That is impossible though. हाँ वो भी है, yeah, yeah, that is impossible. एक पॉइंट यहाँ पे यही बोलूंगा मैं कि द बैडमिंटन में जो इंडियन टीम वॉन थॉमस कप, इंडिया हैज अ टॉप 10 मेन सिंगल्स, इंडिया इज विनिंग मेडल्स, इंडिया इज visibly doing good at international level. That process started probably 15 years back. So let's be very honest that processes take time. You need to be patient. England when dominated 2015 World Cup, the England का जो domination शुरू हुआ है 2015 से white ball में, that goes back to 2008 when Nathan Lehman, the analyst who revolutionized cricket analytics, was appointed by ECB for coaching. And he was a corporate guy. He'd never played sport. Comes from a corporate data analytics background. He also took almost like 2009 से 2015, 6-7 years of टाइम पीरियड टू डोमिनेट दैट. तो आप उस प्रोसेस को देखो, उस प्रोसेस में आपको इंप्रूवमेंट दिखेगा. आप प्रोसेस में बिलीव करो. व्हाट नमन इज सेइंग, कचड़ा पेटी तो खैर अभी तो कचड़ा पेटी बनता है. इट्स अ गुड थिंग, इट्स अ गुड थिंग. पहले तो घर जल जाते थे, पहले तो इट वाज घर घर जल जाते थे, एवरीथिंग इज फाइन. बट अनदर, हम लोग सब जगह पॉजिटिव देखेंगे. कचरा पेटी बन रहा है मतलब लोगों को फर्क पड़ रहा है कि टीम हार रहा है. एंड नो वन विल बी मोर हैप्पी देन डायना एडुलजी, शांता रंगस्वामी, सुधा ममता शाह, बेबन. सुसन इट्टीचेरा, Mamta Mabe, those who played for India 30, 40 and 20 years ago, they would be very happy that the entire country is discussing about today's loss. जीतते तो of course the happiness would have been on cloud 9, but they'll be very happy that everyone is discussing a loss, because that's what we want. If we want a sporting culture, then, but again, हाँ, शयन तो रिप्लाई कर रहा है, पर शयन क्या ही रिप्लाई करेगा. आप कचरा पेटी But के जाके कचरा निकालना तो ट्राई नहीं करते ना, आप नाक बंद करके आगे चले जाते हो. हाँ, like one thing I like to add here यहाँ पे कि मैंने देखा है इंडियन वुमेन्स क्रिकेट का, whenever we face these kind of losses or like heartbreaks, what happens is that like the fans ये social media पे कचरा पेटी होता है, then they give up on the team, and then again जब knockout matches हो जाता है, they're like चलो फिर से आ गया है टाइम सोशल ऑफ मीडिया पे कोर्स, उतरने का. मैं वही तो बोल रहा ठीक हूँ है. ना तौसिफ, मैं वही बोल रहा हूँ कि यू डोंट डिजर्व अ विनिंग टीम, यू डोंट डिजर्व अ विनिंग प्लेयर, because you appear only when the team is winning and the team is in a knockout. You appeared when India won the Thomas Cup in badminton. At the same time, the same player Shrikant, जो पीक पे नहीं रह सकता, कोई भी प्लेयर पीक पे नहीं रह सकता 6 महीने, उसको आप आके हर मैच में गाली दे रहे हो. हमने बैडमिंटन के काफी स्ट्रीम्स किए, वी हैड या ट्रू 20x ट्रू. क्राउड. लोग वही हग रहे कमेंट सेक्शन में कि श्रीकांत ये श्रीकांत, एंड दिस इज अक्रॉस स्पोर्ट्स. कल जाके इंडिया अगर एक मैच जीत लेना ऑस्ट्रेलिया के सामने, तो यही लोग सब अच्छा अच्छा बोलेंगे. पर आज लोग, द वर्स्ट थिंग टुडे, द वर्स्ट थिंग आई एम सीइंग टुडे इज दे आर कॉलिंग हरमनप्रीत रन आउट कैजुअल, एंड दैट Yes. धोनी हैड कमिटेड फुल्ली इन दैट 20 with 19 semi-final. धोनी रनिंग आउट, अगर धोनी रन आउट नहीं होता तो भी इंडिया हैड अ वेरी ऐसा दूर का चांस था वो. लेट्स बी वेरी ऑनेस्ट इन दैट मैच. यहाँ पे हरमनप्रीत डिड ऑल द वर्क टू मेक श्योर इंडिया इज अ चीज. तो अब मैच देखे बिना आप कुछ बोल ही नहीं सकते. पीपल आर कॉलिंग हर दिस, एंड इवन नासिर हुसैन सेड दैट दिस इज अ वेरी स्कूल गर्ली टाइप रन आउट. So what we need to do here is we need to have more matches in England versus England, and we need to beat the shit out of England in each and every format to silence people like Nasir Hussain, and that needs to be done. तो मेरे को तो बहुत गलत लगा है जो भी, मतलब सराउंडिंग, because she is the one who made a fight out of all of this after so many और disasters in मतलब cricket. हम लोग को अगर रीजन ही देते होते ना, हम लोग यहाँ पे कितना 1 घंटा, हाँ नियरली 1 घंटा हो गया लाइव स्ट्रीम का, हम लोग को अगर रीजन ही देना होता, तो वी कुड हैव डन और गिवन सो मेनी रीजंस एज टू व्हाई इट डिडंट टर्न इन फेवर ऑफ इंडिया. अंपायरिंग डिसीजंस ब्ला ब्ला ब्ला, एकदम पहले से वो शेफाली का एलबीडब्ल्यू ये वो. सो व्हेन एज लाइक people who are just doing it live
ये एक चीज है. And someone who is a legend of the game like Nasir Hussain, who's doing a like full-fledged commentary officially, and then he is saying that there's a difference, and this needs some repercussions. ठीक है, जो नमन ने बोला, और तो वो रिपरकशंस मुंह से नहीं आता, बिकॉज वी डोंट हैव दैट स्टेचर अभी, कि फैंस अभी, अगर अगर जो अभी बीजीटी में हो रहा है ना, ऑस्ट्रेलियन फैंस आके जो गाली दे रहे हैं इंडियन फैंस को, औकात नहीं है उन लोगों को गाली देने का, क्योंकि हम लोग बहुत ही आगे हैं. तो वही सिमिलर ये है कि हम लोग को औकात बनाना पड़ेगा by thrashing them at their home again. Okay, and Yeah. possibly winning one or two like World Cups. That is the only way we can, like, I really want to see this from within. Ki I want to silence a particular section of Indian fans. This should never be the case, but I really do want to. I want to like silence a particular set of Indian fans who, after even after baseless years of say following men's cricket and like doing that, they literally have the guts to again come on a specific day to watch women's cricket and then bash the women who they don't even know their full names or like whatever, you know, Yeah, they, yeah, they haven't been a exactly. part of the process, they don't know what is happening with them. I hardly think people even knew that Harman was hospitalized or things like this. They don't know these. So I want these people to realize who they are, know who they are, ki, like yes, we are the ones at fault, to understand that from within, and then try to do something positive for the greater good of the sport. And yeah, so not just here. विघ्नेश बोल रहा है अभी कमेंट से, इतने बड़े विघ्नेश, कमेंट मैं लिखते मैं हो भाई. हाँ. मैं उसको आंसर करूंगा, मैं उसको आंसर करूंगा. बोलो प्रीति. विघ्नेश, विघ्नेश, I mean you have a fair point कि we shouldn't make few Indian trawlers mainstream, but let's talk about three of us. If we on a daily basis in multiple formats across multiple social media platforms and in different forms, we witness this. So I think if Naman is saying this, that this is what happens, he's saying it from his experience of working into the industry, in which he has seen this thing happening on a daily basis. So especially when it comes to, let's say, cricket, तो चलो लोग जानते हैं. There are sports जिसमें people don't know anything, and then one moment there are news comes that this Indian person has lost somewhere, people start trolling that person. अभी तो So that प्रीतिश अभी तो ये कुछ नहीं है. 6 महीने के बाद सीजन शुरू होने वाला है. पहले आएगा एशियन गेम्स, फिर आएगा एशियन गेम्स छोड़ो, फिर आएगा ओलंपिक्स. आई स्टिल रिमेंबर अ व्हाट्सएप ग्रुप 2016 ओलंपिक्स. देन आई यूज्ड टू बी स्पोर्ट्स पर्सन, मैं तो तब बच्चा था. आई स्टिल रिमेंबर व्हाट्सएप ग्रुप, रैंडम आंटी का इन द व्हाट्सएप सेक्शन, कर सिंधु कर दे चढ़ाई. मैं बोल रहा एक तो ये रेसलिंग नहीं खेल रही, आपको एक आप ऐसे उठ के आ गए कि चलो सिंधु को अपन रेसलिंग कराएंगे. तो ड्यूरिंग बिग टूर्नामेंट सब लोग जाग जाते हैं. Everyone starts giving opinions. Everyone, अरे ये क्या कर रहा है, ये शूटिंग नहीं हो रहा है इससे. आप एक बार रेंज में जाओ, try hitting a 8, try hitting a 7, नहीं होगा. Take a bow archery. So even I was shocked. मैं भी archery को मतलब इतना ध्यान से नहीं पढ़ा था. Then I met an archer. I talked with her for around 1.5 hours. Archery is not easy. The back injuries you get in archery are so bad that they ruin your career. So when you think about a sport, when you think about a sports person, please read. मैं वही बोलता हूँ, आजकल इंडिया में लोगों को रीडिंग करना बहुत एसेंशियल है. इंडिया में लोगों को विमेंस क्रिकेट के हिस्ट्री पे रीड करना एसेंशियल है. जो भी स्पोर्ट देख रहे हो उसके बारे में रीड करो. जब आप रीड करोगे तब आपको समझेगा कि आप जो बोल रहे हो सब मतलब कचरा ही निकल रहा है. और तो और एक चीज कि हम लोग शायद थोड़ा भावुक हो गए, एंड लाइक वी डोंट काइंड ऑफ एसोसिएट विद what people have joined the stream, and if they are listening to us, it's certainly a positive thing कि हाँ कुछ तो इन लोग मतलब they are open to different things or open to different opinions, so that reflects. But we are talking from different situations in our life जो कि हम लोग को भी affect किया. Like I'll give you a very simple example कि when it, as Naman said, right, कि when it comes from people who don't know the sport or have absolutely no idea, then चलो हम लोग मतलब ignore कर सकते हैं. But I'll give you a simple example. There's this known friend of mine who like follows cricket religiously. He's part of like Rajasthan Royals fan army and shit. ठीक है. And now after the match he posts some women meme, वो चाय का cup and all that. ठीक है. So these are things that actually hurt you ना, कि these are things कि ऐसा नहीं है कि they don't know the sport.
they don't or they I aren't mean, seeing the fight that is like that India is giving on the pitch right now, but they just don't want to be aware. तो वो मत करो. एंड आई थिंक कि जो लोग स्ट्रीम ज्वाइन कर रहे हैं या हम लोग को सुन रहे हैं, वो ऑब्वियसली वो हर्डल क्रॉस कर चुके हैं, तो उन लोग नहीं करेंगे वो. तो ओपन Yeah. टू चेंज रहो, देखो, सीखो कि कौन कितना इम्प्रूव करना चाह रहा है. अब like a sports like person's journey is very short lived. ठीक है, very short lived, and amidst that also they have to go through a lot. So respect karo sabko. Try to like be a part of the culture in a positive way rather than a negative way, because negative way doesn't bring any good koi bhi angle se. Yeah, yeah. And so need to take this comment from Shayandeep. Ki, why is India not able to save the sport in which India? I think is mentioning about hockey. What can I do as individuals to improve Indian sport? So Shayandeep, that's a very good question, and I would like to address this to whoever 10, 15 people are watching. So as an individual, we cannot do much. हम ज्यादा कर नहीं सकते, बट हम डेफिनेटली वी कैन इम्पैक्ट इन वेरी स्मॉल वे, लाइक द थ्री ऑफ अस by working in sports media that caters to Indian sports apart from men's cricket, we are trying to create a difference. बहुत small difference है, ज्यादा नहीं होगा, पर कुछ तो डिफरेंस क्रिएट होगा. वैसे यू ऑल्सो what you can do is you can keep, now everyone uses social media, so whenever we share something or anyone shares, you find something interesting about Indian sport, please try to share it on your social media. If you have kids in your neighborhood, please encourage them to watch stuff related to Indian sports apart from men's cricket, and tell them to pick up a sport. It's not just for the country, so India needs to become healthy as a whole. I'm not talking only about winning a tournament, winning a sport, becoming very good. Forget that. India is not good in an overall health index as well. चलो कोई लोगों को खाने पीने का प्रॉब्लम होता है, पॉवर्टी होता है, दैट्स अ डिफरेंट फैक्ट, बट आई एम टॉकिंग अबाउट पीपल हैविंग मनी एंड नॉट इन्वेस्टिंग इन देयर हेल्थ. So these are the small things you can do to improve Indian sport. And the yes, so all these things are there, and please keep supporting like you're doing and joining us today. So thank you so much for that. Yes, continue, guys. Vignesh has a very important point here. 43 million was today's match. I mean, yeah, that's brilliant. I think this is one thing which is very, like 43 very million. मेरे को तो yeah, 10 yeah. लाख लाइव दिख रहा था. नहीं, Are ओवरऑल you बात sure? कर रहा है इस टाइम. He's Overall, talking 43 overall, about मतलब we touched highest I think. 43 million today on yeah, Hotstar. yeah, टेलीविजन नहीं कर रहे हम, like we Hotstar. are not including television na, Star No, Sports so what वगैरह. Vignesh has mentioned is 43 million was today's match in Hotstar. That's huge. So I'm assuming he's talking about Hotstar only. Even 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 not 43. Let's like this is a very constant improvement which has happened in the viewership at least. You can see those numbers increasing at least. वो दिखता है उधर कि अभी जो let's say last year जब वर्ल्ड कप के टाइम जो numbers थे ODI वर्ल्ड कप के टाइम उससे better numbers अब you can see there, you know, on that top corner. So it's there. And Salish is saying 8 days before WPL, this buzz is really good from that perspective. So Yeah, that's I what we mean, mentioned yesterday कि uh, वो बस तो है ही, हाँ 24 लाख यार, हाँ वही बट डर गया. 43 See, में सब 43 million is 430 लाख. आप बात कर रहे हो 430 लाख की 4.5 करोड़ लोग हॉटस्टार पे. तो हॉटस्टार क्रैश हो जाएगा बीजीटी के जैसा फिर. हॉटस्टार विल गो redundant if that happens. then we'll have a Gujarati guy from Bombay giving a app free of cost to people for, हाँ if हाँ, you know what I देख लो. mean. Let's not go there. Let's not go there. But yeah, that's I good. think That's another, see, that's another good thing that WPL will be free of cost on Geo Cinema. oh yeah, So that's going to be the so best thing. हाँ. And not So just that, Geo Cinema, the dynamics that that is bringing with the women's IPL and IPL this season, बहुत कुछ ला yeah. रहे हैं. So So I think Geo Cinema ka coverage in general has been brilliant because they did a mock auction also, and there I think they're interesting. The cricket coverage is gonna be interesting. Multi-cam setup ये सब जो होगा, वो एक viewer हाँ, experience all together, you know, अच्छा एलिवेट करेगा. करेगा. हाँ, एलिवेट करेगा लोगों के लिए. एंड फिर वही बात है ना कि क्यूरियोसिटी भी बढ़ेगी ना कि अभी बिकॉज WPL विल गेट द कवरेज फॉर श्योर. एंड उसमें अगर एक नाम ऐसे आ रहा है कि हरले गाला ने आज हरा दिया, मतलब मैन ऑफ द मैच जीत लिया, तो अब कौन है ये जिसने सामने मेगलेनिंग को आउट कर दिया या जिसने सामने यू नो एलिस पेरी का विकेट ले लिया. So those things are also gonna make the fans more invested into this, which is very interesting with big names coming up. Like Sania Mirza का को appoint करना was not just a tactical move; it was a commercial move also, यस. which is very good.
which is very good for the sports because you have a brand, you have a brand ambassador to connect to. So I think all in all, it's so all in all, this is it. This is So a very interesting comment. Shayan is literally in the chat section. वो हंसदे चेहरे दा मतलब ये नहीं कि वो दुख नहीं होता. He is like a chat version of it right now because Shayan has absolutely gone bonkers. And he's already replying to comments on Twitter. I have started helping Shayan right now to reply to some really legendary people But on what is Twitter. Shandeep saying? Ki Achha, I'll take that. first I'll take question. that. हाँ Or हाँ Shan, हाँ say that. हाँ. Shandeep is saying कि why you're not able to save the sport. Yeah, see, there is nothing like saving sports. I think sports, every sports in which you are good, your downfall comes eventually. India का आया था hockey में भी. India went from like after AstroTurf happened. It's a long historic story, history class लगेगी. So not going into details much. India went through a very bad slump. Then India again regained what was there. India ने धीरे धीरे regain किया. ओलंपिक्स में मेडल जीता, अच्छा कर रहे हैं हम. सो एंड शूटिंग एंड रेसलिंग तो आई थिंक इंडिया स्टिल keeps delivering medal, but wrestling में there are n number of factors which are another topic, a whole topic which goes in. Shooting, I think shooting में, yeah, shooting has been pretty disappointing. It happens in every why country. is it happen to other country? अरे It सबको तो happens होता in है भाई. every क्या बात country. कर रहे हो आप? It आप क्या बात happens in कर रहे हो? every है? country. हर जगह तो हो रहा है. कौन डोमिनेट कर रहा है? कौन पूरा डोमिनेट? कुछ भी. क्या बोलते हैं इंडिया में यार, इंडोनेशिया इंडोनेशिया ने थॉमस कप इंडिया से हार गया था. इंडोनेशिया हैज अ पेडिग्री ऑफ आई डोंट नो हाउ मेनी इयर्स इन बैडमिंटन. दे लॉस्ट टू इंडिया इवेंचुअली. सो हर देश में हो रहा है यार. इट्स अ लाइक वेरी इग्नोरेंट कमेंट टू हैव दैट इट डजंट हैपन इन एनी कंट्री. So for a second while we guys were talking, I thought I'll lesson Okay, so this is turning very this is Yeah, turning yeah. into a wild. Wild. अभी wild हो रहा This is what we wild want at chat. 11 This is p.m. after a bad loss. So I went on our Twitter and we did a tweet about Jemima, which has been going viral now. We're very happy for that. One guy called someone Tushar, so he comments, Indian women's team सिर्फ reels बनाने में champion है. I thought I'll help Shayan out and I'll link. और आप यार derogatory comments करने में champion हो. Someone in comes and replies to us, वाह 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 वाह. शायरी चल रही है आपकी उधर. The point is कि लोग इतना ज्यादा, so that's my problem since with cricket fans for so many reasons, just not cricket fans, every fans, that why are you trolling people or calling out people on the not based of non cricketing things. विराट कोहली को लोग इसीलिए ट्रोल करते हैं क्योंकि उसका उसका इंस्टाग्राम पे पोस्ट में कुछ डाल दिया उसने. अरे लीव दैट असाइड मैन. यू आर ट्रोलिंग समवन टू लिविंग अ लाइफ. क्या मजाक है इसका. अभी you'll troll people, you'll start trolling people कि नमन जिम क्यों जाता है, तू खेलना इंडिया के लिए क्यों नहीं खेलता, why are you going to gym? So this is what happened to Harsha Bhogle when he initially came. Bhogle is a guy who I am Ahmedabad, ये वो advertising totally. है. मतलब I know I am a guy, but see the difference between Bhogle and other commentators is everyone who has played cricket cannot be a good commentator because you need knowledge to comment. ही so स्टार्टिंग में उसको ही बोला गया था कि आप क्या क्रिकेट पे कमेंट करोगे. नाउ एवरीवन वो कभी-कभी शिट ओपिनियन देता है तो भी लोग जाएंगे उसके पास. अरे कि आप क्या कमेंट कर रहे हो, आपकी क्या बात है. तो दैट्स द डिफरेंस गाइस. वी नीड टू अंडरस्टैंड कि अगर हम लोग यहाँ पे स्पोर्ट्स की बात कर रहे हैं, देयर इज अ रीजन व्हाई वी आर टॉकिंग बिकॉज़ प्रीतिश हैज ट्रैवल्ड टू ईच एंड एवरी कॉर्नर ऑफ द कंट्री. तौसीफ इज रेगुलरली वर्किंग इन दिस. आई रीड, मैं स्पोर्टिंग लिटरेचर खाने जैसा कंज्यूम करता हूँ. सो उसके वजह से हम बोल पाते हैं ना. अगर विदाउट नॉलेज बोलते तो फिर कोई मतलब ही नहीं था ना यहाँ पे. तो देयर इज अ रीजन व्हाई बोथ दीस थिंग्स आर वेरी सेपरेट. So why I mean it's very weird. It's very weird when people go all out of social, but yeah, I mean social media is a unnecessary evil we have. हम उसका कुछ कर नहीं सकते हैं. And that is not going to change. That is absolutely not going to change. Yeah. तो वो तो होने से रहा. But I'm very glad कि even if we have lost, people have come and people are noticing this. This is what we need. So this is another something, stat. yeah. Another stat. So 2017 ICC ODI World Cup, Women's World Cup, जहाँ पे मिथाली राज before the World Cup had 4,000 followers on Twitter, and as World Cup was going on after third match, her followers went into lakhs. तो तभी से जो बूम शुरू हुआ है that हरमन ने आज वो 161 कर दिखाया. She was almost
उसी close to फॉर्म में that. थी यहाँ, हाँ तो मतलब वो अनफॉर्चुनेट आज हो ओवरशैडो हो जाता उसका लेगेसी। नहीं, आज हाँ ओवरशैडो होता अगर हम जीतते संडे हाँ को। वही तो बोल हाँ रहा हूँ, हाँ हो हाँ जाता। तो ठीक है, थिंग्स हर्ट, वी लूज समटाइम, बट वी आर एट अ वेरी गुड स्टेज अगेन इन विमेंस क्रिकेट, एंड the only path is upward from here. यहाँ से यस मतलब, and as fans again, as I mentioned, we need to be good fans across sports, because ऐसे तो नहीं चलेगा. To be very honest, criticize, see, constructive criticism, as Pritish and Tawsif mentioned, is good, but आप अगर unreal hate लाते रहोगे players पे, तो there is no point in them playing or you guys being fans of the team. So let's hope changes are implemented. तौसिफ, वो तो हमारे हाथ में नहीं है, यस हम तो बस बात कर सकते हैं चेंजेस की. हाँ वही, बट बात कर सकते, बात करें देन दैट चेंजेस अ लॉट ऑफ थिंग्स राइट। Yeah. So all of you, those who are watching this, Sudhir is asking how WPL will change our women's cricket. It is the only thing that's going to change our women's cricket right now. देखो मैं I बोलता हूँ, think इसका आंसर मैं देता हूँ कि विमेन्स आईपीएल कैसे चेंज करेगा। आज कितना तारीख है, 23 फरवरी है राइट। 4 तारीख को आप एकदम जियो सिनेमा पे आ जाओ, चेंज हो जाएगा एकदम। ना धो के आना. नहा धो के हाँ आना, हाँ 10 दिन में एकदम चार परफेक्ट चेंज दिखेगा। 4 तारीख को आ जाओ, ठीक है, और आओ, हमें हमारे लाइव में ज्वाइन करो, बात करो, डिस्कस करो, सवाल पूछो, जवाब दो, Yeah. And डू please ऑल ऑफ make sure दैट। you guys are और fans of a team. डिस्क्लेमर, ऑल्सो डिस्क्लेमर कि विमेन्स आईपीएल में हम लोग के बीच में भी शिट हाउसरी चलेगा, क्योंकि सब डिफरेंट फ्रेंचाइजी को सपोर्ट करेंगे, तो उसके लिए भी रेडी रहो। Yeah. सो So we are going to support different teams. I am a lifelong Mumbai Indians fan, because of Sachin Tendulkar and because of my personal relation with the city. So Tausif, unfortunately, Korbo Lorbo Jitbo not happening this time. So सेम he'll सेम, आई be. थिंक केकेआर हम दोनों की टीम है, एंड वी हाँ वी डोंट तो. हैव अ फ्रेंचाइजी देयर, सो आई थिंक आई विल गो विद माय सिटी ऑफ रेसिडेंस, आई एम सपोर्टिंग दिल्ली कैपिटल्स। मैं तो Yeah. बैंगलोर करूंगा बिकॉज ऑफ द रेणुका एंड पेरी फैक्टर। लेट्स सी। Renuka and Perry factor. सुधीर I सुधीर इज hope. सेइंग, ये तो एडवर्टाइजिंग कर दिया आपने सुधीर भाई। हमने जो 1 घंटे, जो ये 75 मिनट का स्ट्रीम किया है, आप इसको अगर सुनोगे ढंग से, तो इसमें आप एक बार जाना, स्टार्टिंग से सुनना, तो हमने बहुत लेंथ में डिस्कस किया कि WIPL कैसे चेंज कर सकता है। हमने सब कुछ, हमारा यही है. देखो भाई, आप अगर बड़े बड़े टीवी शो वगैरह देखोगे, वहां पे सिर्फ मुद्दे की बात होती है, वहां पे सिर्फ वही टेक्निकल बात होती है. यहाँ पे फालतूगिरी चलती है. हम लोग कुछ भी डिस्कस करते हैं, हम हॉकी घुसेड़ेंगे, हम इसमें बैडमिंटन डालेंगे, विल डिस्कस ओलंपिक्स, विल डिस्कस एवरीथिंग. So this is why we are doing a YouTube thing, and this is not happening on TV, or this is not a professional show till now. कि हमको ऑडियंस से इंटरेक्ट करना, एंड वी वांट टू टॉक अक्रॉस स्पोर्ट बिकॉज वी नो स्टफ अबाउट स्पोर्ट एंड वी वर्क इन इट. So that's the important point of having this. So we need more and more people joining in. We need more and more people to create awareness about sports in India. And thank you for guys for joining. हम लोग रेगुलरली कंटेंट डाला करते हैं चैनल पे, आप प्लीज चेकआउट करिए. दैट विल हेल्प यू अ लॉट, you guys, to learn about Indian sport. And और second हम thing is, ये भी नहीं बोल रहे हैं कि मतलब हम लोग के थ्रू ही इंफॉर्मेशन शेयर करो या समथिंग, जस्ट शेयर इट फॉर द लाइक ग्रेटर गुड ऑफ द स्पोर्ट। एंड इंटरेस्टिंग है, यू नो, वंस यू स्टार्ट गेटिंग इन्वॉल्व इनटू अ स्पोर्ट एंड start knowing about it more and more, then it gets more interesting, believe me। कि मैं भी like other than a certain section of sports उतना ज्यादा फॉलो नहीं करता, बट दिस लर्निंग प्रोसेस इटसेल्फ इज वेरी लाइक सेटिस्फाइंग। तो वो करो, लाइक फील दैट गुड। yep. So that's it, guys. It's been 1.5 hours. We are tired. हमने 3.5 घंटे मैच भी देखी है. I hope you क्लोजर also हो गया हम saw लोगों this. का। हाँ, तो we'll be stopping with the live right now. Shailesh यस Shailesh gets the award for being the most savage person to comment in today's chat. Continue करेंगे, guys. We'll be starting off with women's IPL regular lives यस करेंगे. Apart from that, we also have a वीडियो सीरीज कमिंग, जहाँ पे हम विमेंस क्रिकेट के जूने फ्रॉम 1980 टू 2020 हम पूरा स्टोरीज बताएंगे, अनहर्ड स्टोरीज फ्रॉम विमेंस क्रिकेट. तो विमेंस क्रिकेट के वीडियो सीरीज के लिए भी स्टे ट्यून्ड फॉर दैट. वी आर स्टार्टिंग नेक्स्ट वीक. We are coming up with a lot of WPL lives. Apart from that, check out our content. We really put a lot of effort in creating videos, bringing names that are not heard of.
हम लोग जो नाम, अगर हमने किस प्लेयर पे 2019 में वीडियो बनाया, वो प्लेयर आपको 24 में पेरिस ओलंपिक्स में जीता हुआ दिखेगा, तभी हर एक मीडिया वाले आके बोलेंगे कि चलो हमने इन पे वीडियो बना दिया आज, पर 5 साल पहले हमने इन पे वीडियो बनाया था। हमने 2016 मतलब हम जब स्टार्ट किए थे तब 2017 वी आर कवरिंग नीरज चोपड़ा लाइक एनीथिंग, no one was doing that on a large scale, and then everyone was like Neeraj Chopra, Neeraj Chopra. So that's the difference. So please check out our content, please keep supporting us, and thank you so much guys. Let's hope India wins the next tournament they have. Keep supporting. Thank you Pritish, thank you Tawsif, thank you everyone. Let's meet again, start preparing for women's Premier League. Yes.